Hello, good morning, guys. I'm your professor Ajay Gopal, going to teach you physics subject. In that physics subject, I am teaching you the first chapter, which is our rotational dynamics. In the last lecture, we have learned the concept of rotational dynamics. For example, we have learned what is circular motion, and we have taken various examples of circular motion. For example, Earth is rotating around the Sun is an example of circular motion, or the moon is rotating around the Earth. This is also an example of circular motion. So there are many ways, there are many examples of circular motion. We can take any example, and we have learned the next concept, which is angular displacement. In the last lecture, we have also learned what is angular displacement. And we know that angular displacement is denoted by theta s upon r, or it is written as del theta equals to del s upon r, and this formula can be split in this manner: delta s equals to r into del theta. So all these terms we have learned in the last lecture. Now guys, today we are learning the main concept, very important concept, which is angular velocity. In 11th science or in 9th or 10th, we have learned about simply velocity, which is called as linear velocity. Which is called as linear velocity. And linear velocity is denoted by symbol v, and its formula is v equals to s upon t. So linear velocity is given by v equals to s upon t, where s is displacement and t is time. And this linear velocity is defined as rate of change of displacement with respect to time is called as velocity, or is called as linear velocity. बात फिर से एक बार वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, और इज कॉल्ड एज लिनियर वेलोसिटी. सिंपल वही फंडा है एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करने का. सिर्फ लीनियर की जगह हम एंगुलर शब्द को डाल देंगे और हमारी डेफिनेशन बन जाएगी. कैसे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. फिर से एक बार देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी, एंड एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय ओमेगा. Angular velocity is denoted by omega. So omega equals to limit delta t tends to 0, rate of change of angular displacement with respect to time t is called as angular velocity. So omega equals to limit delta t tends to 0, del theta upon del t, or it is when we have taken limit, so it will be written as d theta upon dt. So omega equals to d theta upon dt. This is the formula for angular velocity. फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? फिजिक्स में फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है. सो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? d थीटा अपॉन dt, और ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन t. ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन t. सो इसका ऐसा यूनिट, its SI unit is radian per second. So SI unit of angular velocity is radian per second. और इसका dimension is m0, l0 and e to the power -1. So this is the dimension of angular velocity, m0, l0, e to the power -1. बहुत ही इजी है. फिर से एक बार आप डेफिनेशन देखिए, आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है. जैसे वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, बस एंगुलर वेलोसिटी के लिए भी वही वर्ड है, सिर्फ एंगुलर शब्द लगाना. कैसे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी. सो वी हैव राइट ओमेगा इक्वल्स टू लिमिट del t tends to 0, del theta upon del t, which is written as omega equals to d theta upon dt, or same thing is written as omega equals to theta upon t.
और इसका SI यूनिट क्या होता है बच्चों? रेडियन पर सेकंड। क्या होता है? रेडियन पर सेकंड। और लीनियर वेलोसिटी का SI यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। And its dimension is m0, l0 and e to the power -1. So ये हो गया next concept which was angular velocity. Now we will learn the next concept which is angular acceleration. The next one is angular acceleration. Angular acceleration which is denoted by alpha. Now simply linear acceleration is denoted by small a. और linear acceleration का definition क्या है? Rate of change of velocity with respect to time. फिर से एक बार देखिए, linear acceleration का definition क्या है? Rate of change of velocity or linear velocity with respect to time t is called as acceleration. बस सिंपल है, वही डेफिनेशन सिर्फ वर्ड एंगुलर आगे लगाना है। तो फिर इसको डिफाइन कैसे करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम t इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस वर्ड को चेंज करो, डेफिनेशन अपने आप याद कर लोगे। फिर से एक बार देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ angular velocity with respect to time t is called as angular acceleration, and angular acceleration is denoted by alpha equals to rate of change of angular velocity with respect to time t. So alpha equals to d omega by dt is a formula of angular acceleration. Formula हमेशा याद रखना है. It is very important to know formula until you pass the 12th science. आपको मालूम है फिजिक्स में फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हर फॉर्मूले को आप सीरियस लेना चाहिए. सो एंगुलर एक्सेलरेशन इज गिवन बाय d ओमेगा अपॉन dt. इट्स SI यूनिट इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. क्या होता है इसका SI यूनिट? रेडियन पर second square, and its dimension is given by m0 l0 t to the power -2. So SI unit of angular acceleration is radian per second square, and dimension of angular acceleration is m to the power 0, l to the power 0 and t to the power -2. So guys, we have learned what is circular motion, we have learned what is angular displacement, we have learned what is angular velocity, and also we have learned what is angular acceleration. Now we will move towards very important section of this chapter, which is relation between linear velocity and angular velocity. This is very important section. Relation between linear velocity and angular velocity. This is a very important topic of this chapter. This question asked many times in a board exam. Derive a relation between linear velocity and angular velocity. Mostly asked question which is asked for 2 marks. So please guys listen how to derive the relation between linear velocity and angular velocity. दो मेथड से हमें इसका रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. So we will look first method. So now we know that velocity is given by, what is velocity? Rate of change of displacement with respect to time t. Rate of change of displacement is given by s, and this is change limit till t tends to 0. So we know that delta s equals to r del theta. हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में देखा है, क्या देखा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय del theta equals to del s upon r. So therefore del s
So from this relation we have taken del s equals to r del theta. So therefore v equals to limit del t tends to 0 r del theta upon del t. So now listen here guys. r is a constant. r ये कांस्टेंट है तो लिमिट में इसको लिमिट के बाहर निकाल देंगे. सो r लिमिट del t tends to 0 del theta upon del t. So v equals to r limit del t tends to 0 del theta upon del t. Rate of change of angular displacement with respect to time t is called as, क्या बोलते हैं इसको? Angular velocity. Rate of change of angular displacement with respect to time t is called as angular velocity. So v equals to r omega. V equals to r omega is the relation between linear velocity and angular velocity. So v equals to r omega, ये दोनों का रिलेशन है linear velocity और angular velocity का. ये रिलेशन आप कभी भी भूलना मत, क्योंकि इसके बेस पर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने पड़ते हैं. अगले से कोई भी चैप्टर में इसका इस्तेमाल हो सकता है. v equals to r omega हमेशा ध्यान में रखिए. v equals to r omega यही रिलेशन है linear velocity का और angular velocity का. So this is the first method. Now we are going to learn what is the second method for finding the relation between linear velocity and angular velocity. Now second method. So we know that delta s equals to r delta theta. So this is, we will be taking a vector form. So delta s equals to r cross del theta. Now divide above equation by del t. So what will happen? We will use delta s upon del t equals to r, because r is a constant. So we will not divide by del t. Del theta upon del t. So this is, when we divide by del t, we will get that equation. Now taking limit on both sides. So therefore limit del t tends to 0 delta s upon del t equals to vector r cross limit del t tends to 0 del theta upon del t. So limit इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि r ये कांस्टेंट है, इसमें r में हम लिमिट भी ले सकते हैं. किसी भी कांस्टेंट का लिमिट ये हमेशा 0 होता है. So now we have after taking limit we get the term limit del t tends to 0 del s upon del t equals to vector r cross limit del t tends to 0 del theta upon del t. So this will give, what is limit del t tends to 0 delta s upon del t? Rate of change of displacement with respect to time t is called as linear velocity. Rate of change of displacement is called as linear velocity equals to vector r cross. Now this term is limit del t tends to 0 del theta upon del t, means rate of change of angular displacement with respect to time t is nothing but angular velocity. So vector v equals to vector r cross vector omega is a relation between linear velocity and angular velocity in vector form. So v equals to r omega, or simply it is written as v equals to r omega in magnitude form. This is in vector form and this is in magnitude form. So again we have find out the relation between linear velocity and angular velocity, which is v equals to r omega. So student, हमने ये देखा आज के लेक्चर्स में कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है. एंगुलर
और एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सेक्शन का, जो 2 मार्क्स के लिए हमेशा बोर्ड के एग्जाम में पूछते हैं, इसको दोनों मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं ये आज हमने देखा। सो गाइस आई होप दैट कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मुझे ये पता चले। और आप कमेंट भी कर सकते हैं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अपने क्वेरीज भेज सकते हैं। थैंक यू।